language. All languages. Huge potential available. Yeah. Talented youngsters and all. So what the industry and stakeholders have planned to encourage those talent, work together, take in a bigger way. We're talking one or two shows because we can do so many shows. India is a big country. Yeah. So what a plan, madam? See, in terms of your industry as well as the stakeholder. So we are a technology industry. We are giving the technology. We are providing the sourcing of the product. We are providing the training and understanding of how to use the product. But whatever music in whichever language across all the states, that is organic. That is the people's popular choice. So which artists they bring on stage, when they have the stage show, that is all organic, as it is always in our country. It is organic. So you'll be shocked. Sometimes a Punjabi singer in Bangalore, there are 30,000 people listening to the music. So music has got no language. Yeah, because cosmopolitan. Yeah, music has got no language. One guy Punjabi working in Bangalore, other Yeah, am I right, Santana? So yeah, you can tell us about the music. So your question was, how is the music industry has a plan to grow? You could already see everywhere the number of, as I said, there was no touring before. There's only one Sonu Nigam show, one Suniti Chauhan show, once in a while. Yeah, exactly. That's right. But now, if you see, Sonu Nigam is doing 5 shows, 10 shows. I'm talking about most of the artists. You could name any Bollywood A-listed artist. There are music IPs being created, which is unique to our own industry, which was never there before. I have done something called Sixth Sense in Bangalore, one of a tech-based music festival. It was an old glass factory, completely converted with graphics, projections. All the artists came down from everywhere, from India, from across the world, and it was something which was never done before. You could see that on the Google or on our page. And people like Book My Show, District, you have many of these people coming on board. Swiggy is one of them, which is again, they are building IPs to promote a lot of artists, and the change is already being seen. We are all already, as Mr. Anil said, we are all looking to build the technology as fast as possible to cater to these kind of market. And it's not just Indian artists who are performing, it's kind of international artists who look forward to come to India, who never thought it will never happen in India. Coldplay being one of the biggest success, U2 was here, and things like that. The only thing what we would wish for these things to develop the infrastructure, the venues to do such shows. That is what we expect the government to step in and the organizations to step in. But there is no, lack of talent that is not going to be recognized. But once all this falls in place, you're going to see a sea of change that is going to come forward. You're talking about that ecosystem, entire ecosystem. Like you're talking about the restaurant getting full, hotel getting full. So all the whole the industry will benefit, all the stakeholders, because of this going forward. Yes, you're absolutely right. All the stakeholders, wherever music is played, and India is creating music like amazingly. There's a very, very high level of popular music that is being created inside Bollywood, outside, in all the language films, South language films, the songs are popular. Now suddenly you see that some song in a Tamil film is popular all over the country. So music has to be played. It has to be played in the bars, pubs, lounges, hotels, everywhere, and on the stage show. But what India is going crazy over is the stage show. Because then you have a community listening. You see, the whole village, the whole town comes together to listen to that music. And that is something new that India is experiencing. It is called the concert economy. And even the whole city feels happy after a stage show. See, it sort of spreads, And for some stage shows, tickets are bought, hotels are booked. Like so many flights, the tickets are all bought for a stage show. Then all the hotels are booked. Then there's shopping. There is crazy things happening, but it's all starting from music. Our exhibition is the mother show for
music playback, music production, music, on the stage, in listening, whether it is anywhere, in all hospitality areas. So, why are so many people coming? The big question, why are 40,000 people coming? There is a market in India. There is a market, there is a demand, and there is consumption. So this is a show where all of the market, the demand, the consumption for music. You know? Sir, Yogesh, Yes. just one more quick question. Talking about the show, AV-ICN show. So what are the things, looking back and now, what are the technology, what are the tools there, globally, locally, for the future, are we ready to compete with globally? So I think you see, as I said, this is not just a trade show now. This is, as I said, it's a platform for booming this concert economy. See everything end to end. What new technologies you want to see, you are being displayed over here. There are these immersive technologies which are coming. You go to the Harman Live Arena, which is here. And then the immersive technologies are seeing. You could see that that's coming big time. The industry is moving into technology space. They're using AI now to create things. So I think those elements are coming in, and those trends you spotted at the show. When you go across the show floor, you move across this hall, you will see how these new technologies are coming in. Earlier it was all hardwired, but now it's all IP-based systems which are coming. So the internet, so everything is now Wi-Fi determined. So those new technologies which are coming at much cheaper rates than what it was before, and a lot of Indian manufacturers now getting into this space. That's what we are trying to showcase at this show, which is driving this concert economy, which is that multiplier impact which you'll see on the economy. Growing at 15% CAGR. We are just 4.5% of the world market. One country of Middle East, Dubai, UAE, is bigger than India. So we are just starting to convert. So you can imagine all of India with 1.4, 1.5 billion people have less penetration than small city of Dubai. But having said that, so we are 200 million last year, but in 2035 we are expected to be 3.2 billion, which is more than 15x of in 10 years. So the growth is just starting to happen. My last question is, Just the last bit. So, according to me, what I've understood, around 143 million or $1 billion, close to that, is what the concert economy approximately is right now, and it is, as he said, the growth will be around 15 to 20% is what we are expecting at. Keeping all the other factors in mind, what's going on in the world right now. Yeah. hope you got your answer. Very big story. This is what you're looking for. For the press, it is a very big story. My last question is, West Asia is one of the biggest markets. पालम एक्सपो में इस बार कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑडियो वीडियो। सो ये पाम एक्सपो जो आज यहाँ पे मुंबई में चालू हुआ है, अराउंड 300 एग्जिबिटर्स है। ये सबसे बड़ा पाम एक्सपो हम लोग को टप कर है। ये ऑडियो विजुअल लाइटिंग और अपना प्रो ऑडियो इंडस्ट्री के लिए है। एंड यहाँ पे अराउंड दिन में 42,000 से ज़्यादा अटेंडीज आने की गुंजाइश है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो ऑडियो लाइटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, कॉन्सर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, साउंड सर इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी अगले 5 सालों में, क्या आप लोगों का अनुमान है? मेरा अनुमान है कि इंडस्ट्री 30% से ग्रो करने वाली है, कॉन्सर्ट इकोनॉमी जो है इंडिया में, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन और म्यूज़िक हिट हो रहा है और स्टेज शोज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेज शोज हो रहे हैं। कभी कभी एक दिन में पूरे कंट्री में आप गिनोगे कितने, हमारे पास 1000 से ज़्यादा सिटीज़ हैं। अब हर जगह पे स्टेज शोज हो रहे हैं, ये एक्सप्लोड होने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है। अब जिसके नहीं है लिखने के लिए एक्सप्लोड वर्ड भी यूज़ करनी चाहिए। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में इनोवेशन कितना योगदान मिलेगा मेकिंग इंडिया? बहुत सारे जॉब्स जनरेशन तो बेतहा है, क्योंकि कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो ये इंडस्ट्री में उन लोग को शामिल कर किया जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि ऐसे ही तो स्टेज शो होता नहीं है, बहुत से लोग चाहिए, तो बहुत से लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, कारीगरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जॉब्स मिल सकती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से कितना सपोर्ट मिल रहा है ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री से? ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और जो सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव है वो उसको सपोर्ट
सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है गवर्नमेंट का थ्रू सब्सिडीज, थ्रू लेबर लॉ रिफॉर्म्स, थ्रू R&D सपोर्ट एंड वेरियस अदर स्कीम्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका इंडायरेक्ट फ़ायदा आपको ऑडियो वीडियो इंडस्ट्री को भी होता है। सर अभी आप लोगों ने बताया चाइना अभी इस सेक्टर पे हावी है, आने वाले दिनों में इंडिया किस तरह से ग्रो करेगा अपने आप को? सो हम अभी स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी से इनोवेशन पे ज़्यादा इकोनॉमी पे जा रहे हैं, और वैल्यू क्रिएशन में हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं। पहले हम R&D करके वहाँ बनवा रहे थे, तो अभी हमने SMT लाइन डाला, SMT लाइन के बाद फैब्रिकेशन, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होते जा रहा है, तो वेफर तक जाएंगे हम अपनी इकोनॉमी। सो दैट्स द आइडिया। टेक्नोलॉजी वाइज किस तरह से इंडिया बूम कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर रहा है मार्केट? देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और सर्विसेज में तो हम काफ़ी अच्छे थे ही, बट विद द AI ये सॉफ्टवेयर और सर्विसेज इंडस्ट्री काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, बिकॉज आपकी मिड ईयर जॉब सारे खत्म हो गए, AI खा गए। तो पहले हम फार्मिंग इंडस्ट्री में थे, फिर बाद में हम सर्विस इंडस्ट्री में गए, अभी नेक्स्ट जनरेशन इज मैन्युफैक्चरिंग। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आपको जॉब देनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में ही आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। पाम एक्सपो का एग्जीबिशन लगा है, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? सो ये हमारा पाम एक्सपो का 24th एडिशन है। ये है शो जो है प्रो ऑडियो लाइटिंग और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। सो उसमें जो कुछ इक्विपमेंट लगता है ऑडियो लाइटिंग और अपना ट्रसेस, सारे नए इनोवेशंस यहाँ पे शो में डिस्प्ले होते हैं, और एनीबडी हु इज़ कंसर्न विद लाइव इंडस्ट्री उसके लिए एक बहुत अच्छा शो है, जहाँ पे आप आपका सोर्सिंग कर सकते हो, आपके टेक्नोलॉजीज देख सकते हो, जो AI से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं देख सकते हो, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ है वो सब डिस्प्ले पे है। सो एक वन स्टॉप शॉप है। अगर आपको ये इंडस्ट्री से कुछ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस इज अ शो टू बी। इस एग्जीबिशन में कहाँ के लोग आए हुए हैं? इस एग्जीबिशन से सारे इंडिया से शो आते हैं, बिकॉज ये एक एशिया का बिगेस्ट शो है इन सेक्टर का। तो नॉट ओनली इंडिया से, बाहर से भी लोग आते हैं, अपने मिडिल ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ पे सोर्सिंग करके जाते हैं। इंडिया के आपके 2 टियर 3 टियर सिटीज़ से भी आते हैं, बिकॉज ये जो इक्विपमेंट है ये नॉट ओनली कॉन्सर्ट्स लाइव इवेंट्स में लगते हैं, पर आपके वेडिंग्स में और कोई टेम्पल्स में और कॉर्पोरेट्स में भी लग जाते हैं। कॉर्पोरेट AV सिस्टम्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लगते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में लगते हैं। सो वो सारे उनके बायर्स भी ये शो में आ जाते हैं। बाहर गांव के लोग भी यहाँ से आते हैं, तो जो आयात निर्यात होती है इससे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? सो आई थिंक गवर्नमेंट का इसको बहुत सारा बेनिफिट ऑलरेडी है। गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडीज़, PLI बेनिफिट भी दिया है सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो बेनिफिट लेके आज इंडिया से बहुत सारे एक हमारे इंडस्ट्री में एक्सपोर्टर जो 5 साल पहले बिजनेस चालू किया था, आज 5 साल में 25 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे इंडियंस आर ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस पूरे जग भर पे। टोटल सर आज कितनी कंपनियां यहाँ पर आई हैं? 300 के लगभग कंपनियां हैं यहाँ पे, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये एग्जीबिशन कितने दिन तक चलने वाली है? ये 3 दिन की एग्जीबिशन है, और अटेंडीज़ यहाँ पे हमको जो मिला है 42,000 से ज़्यादा अटेंडीज़ यहाँ पे 3 दिन में आने की एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू।